कैसे आप सब लोग वेलकम बैक। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टू कृष्णाज लर्निंग हब। आज हम करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 7। ये न्यू एडिशन है तो उसमें 11 होगा। आपकी बुक में 7 हो पता नहीं। आज हम करने जा रहे हैं 7 और 11 चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाने ना सके ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन के ऊपर से एक्सक्रीशन इन एनिमल्स से हमने कर लिया था। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन से बाकी था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस the waste which is present in the blood has to be removed from the body. How can this be done? A mechanism to filter the blood is required. This is done by the blood capillaries in kidneys. When blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. The useful substances are absorbed back into the blood, and the waste dissolved in the water are removed as urine from the kidneys. The urine goes into the urinary bladder through tube-like ureters. It is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of a muscular tube called urethra. The kidneys, ureters, bladder and urethra from the excretory system. तो ये इम्पोर्टेंट है तो इसको नोट कर लेना. द एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली passes about 1 to 1.8 liter urine in 24 hours. The urine consists of 95% water, 25% urea and 2.5% other waste products. We all have experienced that we sweat on a hot summer day. The sweat contains water and salt. Bujo has seen that sometimes in summer white patches are formed on the clothes, especially in areas like underarms. बगल का एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे वाइट पैचेस बन जाते हैं क्योंकि हमारे पसीने में सॉल्ट होते हैं उनकी वजह से वहाँ पे पसीना हो जाता है. The marks are left by the salts present in the sweat. तो मैंने पेन सिलेक्ट नहीं किया. Does the sweet serve any other function? क्या स्वीट अदर फंक्शन देता है? We know that the water kept in an earthen pot matka is cooler. This is because the water evaporates from the pores of pot, which causes cooling. ये तो अभी ये देख लेते हैं. The root here. Similarly, when we eat sweet, it helps to cool our body. भी हमारा 11.3 transport of substances in plants. In chapter 1 you learned that plants take water and minerals nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves. The leaves prepare food for the plant using water and carbon dioxide. During photosynthesis, you also learned in chapter 10 that food is the source of energy and every cell of organism gets energy by the breakdown of glucose. The cells of these use this energy to carry out vital activities of life. Therefore,
Therefore, food must be made available to every cell of an organism. મોલમાંથી નહીં, ખાદી ભવન. ખાદી ભવનમાંથી જ લેવાનું એમ. ત્યાંથી જ લેવાનું છે. ધીરે બોલો, ધીરે ધીરે બોલો મમ્મી, ધીરે બોલ. કે ખાદી ભવન કરતા એ મોલમાં સસ્તું છે. આપું હે આપું પપ્પાને. કેટલા કે કઈ નથી લેવાનું. કેટલા કે છે મોલમાં? 370 નો 1 કિલો 1.2 કિલો 1 કિલો ને 200 ગ્રામ. અને વા ખાદી ભવનમાં ત્યાં ભાવ નથી જોયો પણ એના કરતા સસ્તું હોય અત્યારે સ્કીમમાં છે. સારું હાલ તો એ મોજમાં જ લઈ લે. કઈ કંપનીનું છે? બાબરનું. સારું હાલ. અમે 350 તો આપણે કુતિયાણા વાળાને આપીએ જ છીએ. હા એટલે 370 હોય તો વાંધો લઈ લે. બીજું કઈ લેવાનું નથી ને? આપો ને આને પૂછી લો. એને પૂછ્યું એ તો ના પાડે છે. હવે આ ગયા રસોડામાં પપ્પા એક અને જો મારા તો એક સ્ટેશનરીમાંથી એક 10 વાળી પેન્ટોનિક લેતા આવજો ને, લિંકની બ્લુ પેન્ટોનિક લેતા આવજો ને, એક લિંકની એક 10 રૂપિયા વાળી. હા એ જોયા છે. કહું બોલું હાલને બોલ. Okay, water and nutrients absorbed by the root are transported to the leaves. How is the food prepared by the leaves carried to plants which cannot make food? तो अभी देखते हैं. ओके तो ये मैंने खास एक फोटो लिया है यहाँ से, वो फोटो देखते हैं. इसी का ही फोटो है. ओके तो जिसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ से पहले ऐसे रूट्स ने ऐसे वाटर एब्जॉर्ब किया, ऐसे वाटर होता है वहाँ से इसने ऐसे एब्जॉर्ब किया रूट्स ने, जिसमें रूट हेयर्स होते हैं उसने एब्जॉर्ब किया. तो फिर यहाँ से वाटर है वो स्टेम में जाएगा, फिर स्टेम से ऐसे अलग अलग ट्रीज में चला जाएगा. ट्रीज मतलब कि उसके जो अलग अलग टाइप के ब्रांचेस होते हैं वहाँ पे चला जाएगा, जिसमें से यहाँ से वाटर इवापोरेट होकर स्टोमाटा से रेस्पिरेशन के थ्रू निकल जाएगा. तो यही होती है प्रोसेस पूरी. ओके तो इसमें यही था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वाले में. भी हम नेक्स्ट लेते हैं ट्रांसपीरेशन. In class 5th you learnt that plants release a lot of water by the process of transpiration. Plants absorb minerals, nutrients and water from the soil. Not at all the water absorbed is utilized by the plant. The water evaporates through stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration. The evaporation of water from the leaves generates a suction pool, same that you produce when you suck water through a straw, which can pull water to great heights in the tall trees. Transpiration also cools the plant. तो ओके हमारा चैप्टर इधर ही ओवर होता है. वीडियो देखने के लिए शुक्रिया. लाइक सब्सक्राइब करके जाना.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय। No.